Assalamu alaikum everyone. Welcome to the final video of Introduction to the IBM SPSS by Infinite Statistics. This is your fellow Muhammad Allah and I'm doing Masters in Statistics from Islamic University of Bahawalpur. As of now, we have learned a lot about the SPSS and inshallah we're going to learn a lot more in the future too. So and let me give you a little preview on what we have learned till now. In the previous videos, we have learned you guys actually have learned how to create a variable, how to play with the data a little bit, how to go for the descriptive statistics, how to make the charts and the bars of the different types of the data. And you have learned 3 types of the t-tests also, with the independent sample t-test, with the comparing means with the same sample and all. And we have also checked the relationship of 2 variables by using the correlation analysis. So it doesn't mean that we have learned a lot. This is just the end of the introduction to the IBM SPSS. The introduction was just to make you guys easy to use the SPSS. सिर्फ इसीलिए था कि ताकि आप लोग जो है SPSS से थोड़ा वाकिफ़ हो जाएं, इंट्रोड्यूस हो जाएं, आपको इस्तेमाल करना आ जाए, थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं उसके साथ. इन द फ्यूचर हमारे पास और बहुत सारे एनालिसिस हैं, लाइक वी हैवंट परफॉर्म्ड रिग्रेशन येट. हम लोगों ने अभी तक अनोवा परफॉर्म नहीं किया. और डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस हैं, जैसे हम लोगों ने अभी तक कोई स्टैटिस्टिक्स डिज़ाइन कोई क्रिएट नहीं किया. सो द मीनिंग टू से इज़ कि इंशाल्लाह इन द फ्यूचर we're going to learn a lot more about the SPSS. So just to stay connected, and inshallah, as I have mentioned in the description too, हम लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह SPSS से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे, जिसमें MSc, FSc एंड BSc के लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह. और स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सीखने से आई गेट टू रिमेंबर वन थिंग कि मुझे एक दिन एक दोस्त का कॉम्प्लीमेंट आया. ही सेड दैट ही यूज्ड टू वॉच माई वीडियोज़ बट ही कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. मीन्स कि उसे पता नहीं चला कि कैसे एनालिसिस वगैरह करना है. तो मैंने उससे डायरेक्टली बस एक ही क्वेश्चन पूछा कि हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग ऑल योर एनालिसिस एंड ऑल द वीडियोज़ दैट यू आर वॉचिंग, कि आपने प्रैक्टिस भी करके देखा है कि नहीं. तो उसने बोला कि नहीं, मेरे पास तो SPSS है ही नहीं. सो द थिंग इज़ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप लोगों को वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. इन ह्यूमन विजुअलाइजेशन पावर इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि हम लोग सिर्फ वीडियोस देख के ही जो है एनालिसिस परफॉर्म करना सीख लें. आपको उस टाइम प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. सो माय सजेशंस टू यू इज़ कि आप जब भी वीडियो देखें उसको एनालिसिस परफॉर्म करें, ख्वाह वो SPSS की वीडियो है, ख्वाह वो स्टैटिस्टिक्स लेक्चर रिलेटेड वीडियो है. प्रैक्टिस लाजमी करें, तभी जो है आप अच्छे बन पाएंगे स्टैटिस्टिक्स में. और स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को पैशन से करते हो, अगर आप द बर्डन ऑफ स्टडी समझ के नहीं करते, पैशन से करते हो, तो दिस इज़ नॉट इवन अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, नॉट इवन द स्टैटिस्टिक्स बट एनीथिंग. तो अगर आप वाकई में स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहते हैं, इसमें अच्छे होना चाहते हैं, तो आप इसको अपना पैशन बना के सीखें, तभी आप इसमें बेहतर हो पाएंगे. सो अगेन इन द फ्यूचर वी हैव अ लॉट मोर interesting videos about SPSS and statistics too. So just stay connected. To get connected, follow my YouTube channel so that you can see all the videos we share and you can stay connected all the time with us. Take care of yourselves. I think this will be all for now. Take care of yourselves. Allah Hafiz.